गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक अबाउट चाइना, a peek into everyday China. Now, when I talk of peek into everyday China, आज हम बात करेंगे enduring weakness in China's economy. Why is this? Why have I taken this subject? Firstly, a peek into everyday China. I'm talking after a long time. So that's fine. Uh, and I have chosen this because पिछले एक साल से चाइना का इकोनॉमी इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड धीरे 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 घटता जा रहा है। और इसीलिए मैंने सोचा आज एक विल टेक अ स्टॉक कि चाइना का इकोनॉमी में हो क्या रहा है, असलियत क्या है। सब बोलते हैं कि डाउन है, बट एक्चुअल व्हाट इज द पोजीशन एंड वेयर इज इट टेकिंग चाइना, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो दिस ये जो आज का जो एपिसोड है, दिस अबाउट द लास्ट मंथ, एक महीने का है, अक्टूबर का महीने का है, जहां अक्टूबर के रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल द पिक्चर इज ग्लूमी। मेरी तरफ से इट्स बीन अ ग्लूमी अक्टूबर इन चाइना। ओके, सबसे पहले ये आर्टिकल मैंने देखा आज, क्या बोलता है? As China's economic momentum falters, it strives to maintain hold on global influence and identity. Very important. What is he saying? Very clearly, China's economic system and momentum is faltering. Second part, its global influence is going down. That's the key is, आर्टिकल के अंदर। और तो और अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहा है द 2003 ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स measuring a country's ability to shape international outcomes without force ranked the US first. So US is the first in terms of soft power, while China fell one spot to number 5, outpaced by Japan. So China is not the number one in terms of soft power index. Economic power is waning or rather faltering, right? And overall influence is going down. That generally is the trend line जो हम सब जानते भी हैं और जिसके बारे में मैं पिछले 3-4 महीने से बात कर रहा हूँ। And that is why I have spoken about that series on the end of the 100-year marathon. As far as I am concerned, China's boom is over. The doom is far away. The gloom is now. That's very clear in China. Again, I repeat, the boom is over. The doom might be far away, but the gloom is now. And October has been completely gloomy. Okay, let's go into the minor issues of this and let's analyze what it portends for China. सबसे पहले, China's economic growth expected to slip from 2025 after 1 trillion yuan bond bonanza wears off. This is interesting. इन्होंने क्या किया है कि इनका कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो या इनका पैसा हाथ में नहीं था, तो इन्होंने बॉन्ड्स बेच दिया, बॉन्ड्स बना के गवर्नमेंट ने बेच दिया। किसने खरीदा है ये बॉन्ड्स? आम जनता ने। क्या आम जनता को पैसा पूरा मिलेगा? मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जिस तरीके से चाइना के सिक्योरिटी चल रहे हैं और जिस तरीके से काफी चीज इन चीजों के बारे में हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में चाइना के अंदर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट these bonds will come back. Some would be long term, some would be short term. ये नॉर्मल गवर्नमेंट करता है, हमारा आरबीआई भी बॉन्ड देता है, तो इसी तरीके से उन्होंने दे दिया, पर ज्यादा दे दिया पैसा इकट्ठा करने के लिए। पर इससे थोड़ा जीडीपी बढ़ेगा, बट ये इनका खुद का कहना है कि 2025 से इकोनॉमी दोबारा डाउन जाएगा।
ये इनका विशेषज्ञों का बोलना है. So that's the first marker. Their influence is waning, economy is faltering, right? Soft power is going down. What next? So what's the inside story? Manufacturing activity surprisingly contracts in October, and bumpy road ahead. We'll come to the graphs. I'll show you some graphs to highlight all this. We'll just go through the headlines and then go to the thing. Next, inflation weak, weak consumer prices continue, deflationary pressure deepens. So China is actually today is in a deflation mode. Deflation mode means the economy is contracting. आप बोलेंगे यार आप तो बोल रहे हो चाइना इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वगैरह बोल रहा है कि उनका ग्रोथ हो रहा है 4-5%. दैट्स द ट्रिक. चाइना इज पंप प्राइमिंग इट्स जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, बट एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है. So the real economy might be shrinking, the false economy and the figures which are coming out of China might be showing a growth. This is what one has to understand. क्यों? इसका डी रिस्किंग भी हो रहा है, यूरोप में डीकपलिंग भी हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह. यहाँ तक 2 or 3 days later, there's going to be a meeting between Joe Biden and Xi Jinping. और इसमें क्या अभी तक खबर आ रहा है? खबर ये है कि द स्टोरी अबाउट यूएस फ्रॉम चाइना इन आर्टिकल्स एंड मीडिया हैज सॉफ्टेंड. कम हो गया. कुछ दिन तक चाइना यूज्ड टू से यूएस इज अ हेजेमॉन, यूएस इज यूजलेस, ये वगैरह 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 तीखा मीडिया खबर आता था. बट नाउ चाइना हैज सेइंग ओ नो नो वी नीड टू बिकम गुड फ्रेंड्स, ये वो ऑल दैट. So it's signaling, they're signaling to US to catch up. If US doesn't patch up, China is in trouble. What happens to US is a different story. US also has having problems, that's why they want to do some patch up. But this patch up will be okay, not too much, not too bad. But it will not revive China's economy, nor will it give trouble to USA. That's my view. And in any case, that will come out next week. We'll discuss about it, and maybe on Monday I'll take a open house and discuss where it is, because by then we'll know what the whole story is. Okay, what's happening in October? Manufacturing not in high spirits in October as factory activity contracts. So factory activity contracts. What's the outcome? First, factory activity contracting means no exports. Exports have reduced. Second, that is contracting, which means jobs are not going up. If they are there, they are there. Otherwise, there are job losses. Factories might be even closing down. Some factories would come up, some would close down, but overall, there's a contraction. The sale is not taking. I mean, what little I know is these factories are struggling to stay in business in China. Okay, their whole manufacturing ecosystem is at risk, right? Trade, exports continue to slide, manufacturing down, exports down, right? Imports have come up. This is interesting again. Why have imports come up? Imports have come up, right? The imports, China has started importing a little more. What's the idea of this imports? These are the raw materials required for their infrastructure push. This is interesting. I'll talk about it a little later. So what they want for their infrastructure, they're importing. But their exports have gone down. Overall, their trade surpluses are narrowing down. So that's also going to hit them. Okay. Now, this is something which is happening. I mean, I'm not, this is, so you put the whole picture in place, पूरा दृश्य आप बना लीजिए, तो बड़ा क्लियर है कि मंदी चल रहा है.
जो हिंदी में बोलते हैं ना मंदी, भाई बाजार का क्या हाल है? मंदी है आजकल चाइना के बाजार में। ठीक, ओके। इकोनॉमिक रिकवरी मोमेंटम टेक्स अ बैक स्टेप। ये लगातार, ये पूरा इस महीने के फर्स्ट 15-20 डेज, अक्टूबर का कहानी यही आ रहा है पिछले एक महीने से। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटी, सब कुछ है। सो मेन पॉइंट, ये चार फोर टेकअवेज क्या है, वो इसीलिए मैं वो येलो बॉक्स में डाला है। रिन्यूड डिटेरिएशन इन फैक्ट्री एक्टिविटी, a further loss of momentum, weak across the board, more to be done to avoid backside। क्या करना है इनको नहीं पता, अभी अभी इनको बिल्कुल नहीं पता हो रहा है करना क्या है। इसीलिए जी जिनपिंग ने छोटे कुत्ते की तरह जा रहा है यूएस से, बाइडेन के पांव पकड़ेगा किसी तरीके से, बोल के कि भाई वो मनाने के चक्कर में है कि भाई हमसे ज्यादा खरीदो। सो दे माइट बी, और ये they will come to a deal in some manner because China is getting squeezed, and its role in Middle East in this Hamas war is weak। वो ठीक है, वो ईरान के साथ बात कर रहा है, मिडल ईस्ट के साथ बात कर रहा है वगैरह वगैरह, बट नो वन इज बॉदर्ड अबाउट इट। कोई पूछ ही नहीं रहा चाइना के बारे में, ये इसराइल हमास वॉर में। सब यूएसए की तरफ देख रहे हैं। रशिया ने बोल दिया कुछ बड़ा चढ़ा के, प्यूटिन साहब ने, पर चाइना के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं ना। चाइना को वहां पाव मिल रहा है टू टेक द थिंग फॉरवर्ड। Okay, and China can't take a tough stand because it has to rely on Israel for technology। ये मैंने पहले भी बताया। Israel has Israel is very clear। It will now extract from China what it has to once this war finishes, and China knows that. China cannot take a tough stand either against Israel or against Middle East। Mark my words. Going ahead, this will come up। You will see China will not have a role। So and influence तो वैसे भी जा रहा है। When your economy is not booming, who will look at you? आपके पास में आपके जेब में पैसा नहीं है तो कौन पूछेगा आपसे? ठीक, चाइना का प्रॉब्लम ये है आज के दिन, कोई पूछ नहीं रहा। हाँ, कर्जदार पूछ रहे हैं, जिसके ऊपर इनका कर्ज है ना, मतलब जो देश चाइना में को पैसा देना है, वो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि भाई हमारा लोन माफ कर दो, और चाइना को माफ करने की मतलब मुश्किल है। ओके, राइट। देयर आर सम, एक संक्षिप्त रूप में जिसने लिखा है, आई हैव पुट डाउन पॉइंट्स, ये थोड़ा पढ़ेंगे एंड यू विल सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। The sharp decline in the trade surplus may increase the pressure on China's balance of payments, which is already threatened by sustained capital outflows and the dearth of inbound travelers। Very interesting। बहुत बोल चुका है ये एक लाइन में। एक तो इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर गोइंग डाउन, सस्टेन्ड कैपिटल आउटफ्लोज मतलब पैसा बाहर जा रहा है चाइना से। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब लोग बाहर जाके खरीद रहे हैं मकान, और बाहर उनका पैसा भेज रहे हैं, तो आउटफ्लो तो होगा ही, एंड कोई आ नहीं रहा चाइना के अंदर। एक्सपोर्ट्स टू डिक्लाइन ओवर कमिंग मंथ्स बिफोर बॉटमिंग आउट द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो 7 महीने क्या है कि ये एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होते जाएंगे उनके हिसाब से। ये मेरा कहानी नहीं है, ये उन्हीं का। ये it's one of those articles which I'm showing you, or rather it's a mix of all, and these are straight sentences which I've lifted and put it in a packet. Expect most advanced economies to experience either mild recessions or weak GDP growth in the near term, which will weigh on their demand for foreign goods। Naturally, entire Europe is in war। Their main problem is war, Ukraine war। अगर यूक्रेन वॉर के साथ वो कष्ट में है, तो उनका इकोनॉमी डाउन हो रहा है, एनर्जी है ही नहीं उनके पास। अभी ये मिडिल ईस्ट भी फंस गया, और मिडिल ईस्ट वाले अभी वो अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे चाइना के ऊपर। अफ्रीका में पैसा है नहीं, इंडिया इससे खरीद नहीं रहा। जापान कोरिया के साथ इनका किटपिट है, वो भी ये है।
फिलीपींस जैसा देश इनका, दे आर कैंसलिंग बीआरआई, and many countries are down trending on the BRI. So what will happen if people can't buy from China? Naturally, China's exports will go down. Neither will there be FDI. वो भी बात करेंगे. Imports are likely to rise more slowly going forward. So imports will rise with a step in infrastructure spending set to support demand for metals and keep imports on an upward trend. So China will continue to import, and this forecast is till middle of next year. Okay, so जो भी सोच रहे हैं कि चाइना विल रिकवर और ये रिकवर हो गया अगले 6 महीने में दोबारा ये शेयर बन जाएगा, ये शेयर नहीं बनने वाला है। ये ड्रैगन जो है ना चिपकली बन गया, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए सबको। ओके, सप्लाई चेन relocation could be already driving exports away from China, जो हो रहा है। सप्लाई चेन रिलोकेशन तो हो ही रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर चाइना का एक्सपोर्ट 15-20% कम हो गया तो चाइना का इकोनॉमी के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा ये, और ये 15 का से 20% अगर कट गया तो इनका जीडीपी 1 से 2% डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये साइकिल है और ये पूरा चेन जो है ना इसका कोलैप्स हो रहा है। Shrinking exports point to a weakened link between China and the global economy as multinationals seek less risky investment. तो मल्टीनेशनल जो हैं बाहर जा रहे हैं, चाइना में कंटिन्यू करना नहीं चाहते या उनका पैसा बाहर लगा रहे हैं। चाइना में जो मल्टीनेशनल्स थे उसको जी जिनपिंग ने तोड़ दिया। अलीबाबा, टेंसेंट, ये जो बाहर जाके बाहर दे वर टू एस्टैब्लिश। इनफैक्ट 2 साल पहले Alibaba was to be one of the biggest multinationals in the world. जी जिनपिंग ने उसको तोड़ दिया और जैक मा को टीचर बना के कहीं गांव में भेज दिया। मैटर फिनिशेस। तो ये प्रॉब्लम भी है, श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स। चाइना शिपमेंट टू द यूएस कंटिन्यू टू फॉल, इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर आप देखेंगे 3 दिन बाद जब जी जिनपिंग और बाइडेन मिलेंगे, जी जिनपिंग ज्यादा बोलेगा नहीं, वो यही बोलेगा चलो हम सुलह कर लेते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, ड्रॉपिंग बाय 8.2% ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल के मुताबिक इस साल 8.2% डाउन है। उससे पहले 9.2% था डाउन सितंबर में। थोड़ा बहुत बड़ा है पर 9% कहाँ, 8% कहाँ, और 1% बढ़ोतरी हुआ तो उसमें क्या। तो दे आर कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम चला आ रहा है। एक्सपोर्ट्स एशियन एशियन जो बगल में है, और जापान, साउथ कोरिया उसमें भी शामिल है, थाईलैंड, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक, कंबोडिया, लाओस, इनमें लाओस और कंबोडिया के साथ तो करते ही करते हैं क्योंकि ये दोस्त हैं, बाकी सब इनके दोस्त नहीं है। स्लम्प्ड बाय 15% लास्ट मंथ, और उससे पहले सितंबर में 15.8%। ये जो इनका नेबरहुड है बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, और इस नेबरहुड में इनका एक्सपोर्ट्स डाउन हो रहे हैं। ये फिगर्स हैं, ये आंकड़े हैं, ये कोई इसमें दो राय नहीं। नहीं नहीं, आप ए बोल सकते हो, वो बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि भाई चाइना वाले झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोलेंगे भाई, वो तो हर वक्त उल्टा बोलते हैं कि हमारा ज्यादा बढ़ रहा है। ये कष्ट में है ये इकोनॉमी, जो हमें पहचानने की जरूरत है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये उनके हैं। आगे ग्राफ्स देखिए आपको पता चल जाएगा। ओके, पहला ग्राफ देखिए, चाइना कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट। देखिए, जो भी है कंज्यूमर इन्फ्लेशन हो या होलसेल प्राइस इंडेक्स हो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, बढ़ना चाहिए। क्यों? जब तक दर थोड़ा 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 ऊपर नहीं जाएंगे, मुनाफा कैसे होगा? मुनाफा नहीं होगा तो कमाई कैसे होगा? कमाई कैसे नहीं होगा तो वेतन कैसे बढ़ेगा? वेतन नहीं बढ़ेगा तो आपका आमदनी कैसे बढ़ेगा? आमदनी नहीं बढ़ेगा तो आप खर्च कैसे कर सकते हो? इट्स अ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल। तो उस हालत में उस हालत में
चाइना का क्या हाल है? इसका पूरा डाउन। हेडलाइन सीपीआई डाउन, नॉन फूड एक्सपेंडिचर डाउन, फूड डाउन, सब कुछ डाउन। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड। ट्रेड भी जीरो से डाउन ही है, थोड़ा बड़ा है पर डाउन ओवरऑल। जहां, और ये 2016 का से ग्राफ है, ठीक। 2020 वगैरह में जब कोविड सेट हुआ तो इसका इकोनॉमी काफी डाउन हो गया था, उसके बाद बढ़ गया बिल्कुल, और दोबारा अभी डाउन हो गया, अभी डाउन में ही है 2023 में। ओके, अगर ये है तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है? ये फैक्ट्री क्या खरीद रहे हैं वो है। अगर फैक्ट्री कम खरीद रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कम है, क्योंकि वो जो लागत है वो कम हो रहा है, जो रॉ मटेरियल का खरीदारी कम हो रहा है, और 50% के नीचे है तो ये कॉन्ट्रैक्शन जोन में है। ठीक, मार्च फरवरी मार्च में थोड़ा ऊपर बढ़ा था, सबने सोचा वाह वाह चाइना वापस आ गया, अब डाउन दोबारा। अब पिछले 3 महीने से डाउन ही चल रहा है 2023 में, बहुत बुरी तरीके से डाउन में जा रहा है, इनका सर्विसेज सेक्टर भी डाउन हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि चाइना के अंदरूनी का हालत क्या है, और ये चल रहा है पिछले 8-9 महीने से। ये देखो, ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग परचेसेस इंडेक्स ये भी डाउन है, सब कुछ डाउन जा रहा है। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाइना's फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूम ऑफ years past has ended। ये बूम खत्म। आई like I told you, China's boom time is over, the doom might not have arrived, but the gloom has started. That is why you take any index of China today, it's decreasing, whether it's uh, consumer price index, the wholesale price index, imports. Imports are the only one which is increasing. Exports are going down. Overall, the economy is absolutely stagnant. If I can be, you know, little kind about it. That's all. बट इकोनॉमिस्ट से ऑल होप इज नॉट लॉस्ट, वो तो उनके खुद के इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो बोलेंगे ही, पर एफडीआई डाउन है। ये फिगर्स जो है ना, मैं देखा कहाँ मिलेंगे मेरे को ये फिगर्स, तो बाहर जाके देखा, ये देखिए डाउन। लुक एट दिस ग्राफ, एक्सियोस। Foreign investment in China goes negative for the first time in decades. This is serious. From such a long time, foreign investment has been very high in China, and it peaked in 2020. Now it's gone down. No one is investing in China. If no one is investing in China, how will the economy grow? Why should people invest in China? सब बोलते हैं कि चाइना के पास बहुत पैसा है, वो कहाँ भी लगा सकता है, पर कोई ले नहीं रहा। मैंने कल ही बताया था आपको कि India has rejected Chinese investment. Why? Because when Chinese money comes, buys your companies at cheap rates, they gain control and make profit. So India has said no. All those countries which have a border with India will not uh, allow this investment. And this has been replicated by many countries. बाकी countries ने भी ऐसे लागू कर दिया. So Chinese FDI is not accepted then. FDI from outside going into China means what? Investment into China means coupling with the economy. It means uh, setting up factories. It means setting up services. That's not happening. Why it's not happening? Xi Jinping has put security laws. As per security laws, all the companies which are investing in China are open to investigation, information, and whatever information they're collecting, they have to disclose. So no one wants to invest. In fact, those investments, some of the investments, okay, some of the companies which, like Bain and Company, which is basically an investment advisory company, जो सबको बताता है कि भाई चाइना का हालत ये है, उसको बोल दिया भाई आप यहाँ से जाओ, उसके ऊपर रेड वगैरह कर दिया चाइना ने। उसके बाद बाकियों के पास खबर नहीं है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है, खबर नहीं है तो कौन इन्वेस्ट करेगा?
इसीलिए एफडीआई डाउन इस साल पूरा। आपका एफडीआई डाउन है, एक्सपोर्ट है ही नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाउन है, तो आपका इकोनॉमी कहाँ जा रहा है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ओके, स्टॉक्स डाउन है, ये एक खबर है कि कांट मेक मनी, चाइना's ओल्ड एंड यंग alike step back from stock market game। क्यों? चाइना stocks are at all time lows। ओके, so with, see the second paragraph, what does he say? With diminishing prospects of returns and competing uses of their time and money, potential investors both young and old are unlikely to dive in, period। Chinese themselves are not investing in their stocks. Why? They're not sure. As simple as that. Okay. Is there more to it? There's more to it. There's financial misconduct in the debt. And who are the guys who are doing this misconduct? Local governments. Local, their state governments have amassed hidden debt. And that could be as high as 50% of China's annual GDP. 50% तक उन्होंने उधार ले लिया, हिडन डेट। और ये पूरा चाइना के नियम का उल्लंघन है। तो क्या करेगा चाइना, देखने वाली बात है। जी जिनपिंग क्या करेगा? कुछ लोगों को फायर कर देगा, इन्वेस्टिगेशन कर देगा, करप्शन में डाउन कर देगा, पर उससे क्या फायदा? आपका इकोनॉमी तो टफ है ना। ओके, देखो, प्रॉपर्टी जो है वाज चाइनाज मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी, 30%। कुछ लोग बोलते हैं 25%, कुछ 30, 35। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिला दोगे तो 35-40 तक भी पहुंच जाता है। वो टफ है पूरा आज के दिन। उसको इन ल्यू, व्हाट इज दैट सेक्टर which can replace property? Is this China's hunt for new industrial pillars to replace a wobbly property market? चाइना ये जिचिन बोलता रहता है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह के साथ आई विल गो थ्रू, नहीं होगा। ये यही बड़ा क्लियर साफ नजर आ रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव अ सेक्टर व्हिच कैन रिप्लेस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी डाउन है और रिवाइव नहीं होगा। आज तक रिवाइव नहीं हुआ, पिछले एक साल से हम इसी के बारे में बात करे जा रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं हुआ चाइना के अंदर। सो दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर चाइना। ओके, they're trying services, they're trying technology, they're trying EVs, right, batteries, all that nonsense, but it's not working. It's just not working. It's not working because the scale is not so much। ठीक है, आप बैटरी का कार बना लोगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, खरीदेगा कौन? यही है ना, यूरोप वाले के खरीद सकते हैं। कोई अफ्रीका में थोड़ी ना वो जाके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेगा चाइना का। कोई डिक्टेटर खरीद लेगा अपना घर के लिए। आम आदमी कौन खरीदेगा? आम आदमी तो वेस्ट में खरीदेंगे, जर्मनी में, यूके में, जिसके पास पैसा है, यूएसए में, कनाडा में। पर उनके साथ तो एक तो कटपिट हो गया और उनका इकोनॉमी खुद ठंडा पड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट तो होंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है, पर उतने होंगे जो पहले थे। क्या प्रॉपर्टी सेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। ये इशू है इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चाइना डबल्स डाउन ऑन ट्राइड टेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग स्पेंडिंग, बट इज इट स्टिल द राइट फिट इन अ डेड क्राइसिस? ये खुद अपने आप को पूछ रहे हैं कि भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चाइना कर रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा बेवकूफी है। इट्स एब्सोल्युटली फूलिश स्टेप। व्हाई चाइना इज गोइंग आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। यू पुट मनी इंफ्रास्ट्रक्चर, यू बिल्ड अ रोड, यू बिल्ड अ डैम, डैम बनाओ, तो उसमें मटेरियल चाहिए आपको, उसमें लेबर चाहिए, सर्विसेज चाहिए, सब कुछ, आपका जीडीपी ऊपर आएगा। पर आप बना लो, एक इमारत बना लो, डैम बना लो, रोड बना लो, ब्रिज बना लो, अगर उससे कोई और फायदा नहीं है तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट है। और चाइना ने पूरा खड़ा कर दिया इसे, अभी भी कर रहे हैं ये।
वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिससे चाइना को कोई फायदा नहीं है और कोई मतलब नहीं। राइट? ओके। सो ये बात है चाइना का असलियत। वी हैव टू अंडरस्टैंड, और उनको कोई रास्ता नहीं है प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। आपको न्यूज़पेपर लोग बोलेंगे ये चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो पैसा देके वो आर्टिकल आ जाएगा, मेरे को 1000 रुपए दे दो, मैं भी बोलूंगा भाई चाइना जो है नंबर 1 इकोनॉमी है, मैं भी लिखूंगा। हो सकता है मैं अब वीडियो भी जारी करूं, बोलूंगा नहीं नहीं यार मैंने गलत बोला है, अभी चाइना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, वो उसका इकोनॉमी बड़ा चल रहा है, पर एक्चुअलिटी में टफ है। ठीक। ओके। कैंटन फेयर हुआ, कोई यूएसए और वेस्ट से कोई नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। आए कौन? जो चाइना के दोस्त हैं। कौन है दोस्त? जिनके पास पैसा नहीं है। और वहां क्या है, इन्होंने यूएन से कर दिया और ये बोल रहे हैं यूएन 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 यूएन। बट ये बहुत तो सेकंड पार्ट ऑफ द हेडलाइन इज इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फेल टू बीट प्री कोविड लेवल। और ये कहानी, ये एक ही फेयर में नहीं, पिछले 4-5 महीने में जितने ने इन्होंने फेयर किया शेंजन में वगैरह वगैरह वगैरह, सब फेयर टफ है, कोई इनको ऑर्डर नहीं मिल रहा, खास ऑर्डर कोई नहीं मिल रहा है। अगर ऑर्डर मिल रहा है तो गरीब देशों से मिल रहा है, और वो चाहते हैं सस्ते में माल। तो इनका नंबर 2 या नंबर 3 माल ही बिक रहा है। नंबर 1 माल जिसमें पैसा बना सकता है वो मलाई जो है ना, वो गया। ओके। Why can't China woo private investors? Beijing gathers regional economic planners to ask them. कि सबको वही इकट्ठा कर रहे हैं जितने कम्युनिस्ट हीरो हैं, कि भाई क्यों नहीं आ रहा है कोई, तो कोई नहीं बोल रहा है असलियत क्या है, क्योंकि ये सब कम्युनिस्ट हैं, सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे को। ओके। राइट। टू रीबूट चाइनाज इकोनॉमी, बीजिंग मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस टू लेट इट गो। ये इसमें किसी ने लिखा है कि भाई इनको छोड़ दो, अगर जब तक आप इनको नहीं छोड़ोगे तो ये पैसा नहीं बनाएंगे आपके लिए। और जी जिनपिंग इनके गला पकड़ के बैठ गया, हमें क्या लेना देना है। और अच्छे तरीके से पकड़े तो हमारा फायदा है। मैं तो बोलता हूँ जी जिनपिंग को मलाई मक्खन सब भेजो, बटर चिकन भेजो, खा पी के इनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स का गला घोंट सकता है, और खुद का गला भी घोंट सकता है। फिर 2-3 साल पहले बताया था और बार बार बता के आता हूँ, जी जिनपिंग जब तक चाइना में है भारत को फायदा है। ओके। नेक्स्ट, China's fintech dilemma, beloved by small businesses, distrusted by regulators. ये ये कभी कभी ऐसे आता है कि भाई फिनटेक को खोल तो दो। फिनटेक क्या है? डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल एनेबलमेंट, ये का सब करो। यही करने से क्या है, शी जिनपिंग ने सोचा कि मेरा कंट्रोल बाहर जा रहा है, चाइना इज गोइंग आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो इसने फिनटेक को तोड़ दिया 2 साल पहले। सारे छोटे छोटे बिजनेस वाले चाहते हैं कि फिनटेक वापस आए, पर इनका रेगुलेटर मान नहीं रहे। मान क्यों नहीं रहे? जी जिनपिंग बोल रहा है कि मैं आपको आई नॉट लेट यू गो, थैंक यू। सो दिस इकोनॉमी इज हेमरेजिंग। ओके। नाउ China embarks on transition to consumption-centered economy as Beijing moves to unleash spending power, investment guru। कोई है होगा इनका कम्युनिस्ट, तो ये बोल रहा है, पर क्या होगा ये? कंज्यूमरिज्म तो है ही नहीं, कंजम्पशन तो डाउन है, इन्फ्लेशन डाउन है। इन्फ्लेशन क्यों डाउन है? दर जब घट जाएंगे तभी तो इन्फ्लेशन डाउन है। दर क्यों घट रहे हैं? कोई खरीद नहीं रहा। ये तो डिफ्लेशन में है, इन्फ्लेशन में नहीं है। सो बहुत कष्ट है, बोल रहे हैं, हाथ पैर तड़प रहा है इनका। ओके। ये देखो क्यों असलियत।
China cements party control over finance, clamping down on risk, but making investors sweat. Xi Jinping जी सबके गला घोंट रहा है. क्यों? अगर ये छोड़ दिया, सबको सांस लेने दिया, जिस तरीके से सब नॉर्मल आदमी चाहता है, और वो अपना काम शुरू हो जाता है, तो प्रॉब्लम, जी जिनपिंग को प्रॉब्लम. ओके, लास्ट स्लाइड ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टोल्ड टू अवॉइड प्राइवेट मेमोरियल इवेंट्स फॉर फॉर्मर प्रीमियर लीग की चैंग. ये जब वो मरा, स्टूडेंट्स को बोला गया कि भाई आप उसके इसमें नहीं जा सकते हो आप. ओके, तो उसका अंतिम संस्कार के लिए आप नहीं जा सकते हो. तो फंस गए. क्यों? ये क्यों बोला जा रहा है कि डरता है, डरते हैं? जब एक लीडर अपने लोगों से डरता है, तो उनको छूट नहीं होता है कुछ काम करने के लिए. ये दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ चाइना. Whenever someone dies, a leader dies, and there's always problems. So Li Keqiang जब मर गया था, तो Xi Jinping did not allow students to get together, क्योंकि अशांति पैदा हो सकता है, प्रॉब्लम्स. तो इससे साफ जाहिर है कि चाइना का प्रॉब्लम्स आर डीप. lot of problems in China. Their economy, very clearly, if you've seen for the past 8 9 months, is slowly going down. I'll repeat, this economy will not collapse because 1.5 billion people will not collapse. उनका तो कारोबार चलता रहेगा कुछ ना कुछ. After all, they have to live. But इनका जो शक्ति है, it's over. So I'll repeat what I've been saying. The boom in China is over. The doom might not arrive, but the gloom is certainly certain. China's economy will not bounce back, at least till next year. And after that, I doubt it will. And this is my assessment. And if you are not satisfied with this assessment, have a look at the end of the 100-year marathon series, which is ongoing. The next one is on geopolitical risks. I've spoken of the economic structure, I've spoken of demography, I've spoken of ideology already. And then, of course, I've spoken of climate change also. And then you'll understand where China is heading. With this, thank you for today evening to listening to this talk. I'll now take on questions. Okay. Uh, okay. Sayantan says, thank you so much for your videos. You made the most detailed video of China. My request is, can you make a single video on India-China relation from past to present? Yeah, why not? That's a good idea. I'll make it. Right? I made it in patches. I made it in the 62 period. I made it this thing, but I'll go through the historic evolution of India-China relations. Sir, they cannot. Can they not print yuan and pay the bondholders? Printing yuan can result in inflation, thus circumventing deflation and reviving their economy through internal consumption. Uh, is my analogy stupid? I'm not sure. Your comments, please. Look, you can print and print your way out of trouble, but it will go into hyperinflation at some stage. That's the thing. There's no problem in what you're saying, but and that's I'm sure they're doing it already. Whatever you're telling, they're already doing it, but I doubt if that's the answer to the problem. That's my view, right? Popeye, what's your thought on transgender being added to the Indian Army? Popeye, don't react to newspaper reports and all that. Let's see when it happens. Okay, too far, and this is not the thing for that.
Yeah. Uh, and don't talk like this, saying Hijron ki Fauj and all. It's your army, it's our army. We shouldn't talk ill of the army. And I will not tolerate it. If this is your idea of talking and making fun of the army, I'll not, I might even not allow you in this discussion. Okay. Basically, these Chinese have jumped the gun and shot themselves in the foot on an all economic and geopolitical parameters. Your views. Yes, they have shot, but you need to understand why they have done this. Around 2010-11, they thought that they have arrived and that they can't be shaken off. But they also had problems of loss of control. Internally, they felt that the Chinese Communist Party was losing control of the system. So they started reversing back. In 2020, when the COVID came, they thought they had the great opportunity to stamp their authority. Right? When COVID came, they let COVID out so that the whole world is affected. And they took whatever measures they had to, and their economy shot up. And then that gave them the false idea that, false security that they can rule the world. And they came out with whatever they had to do. And that, put the whole world against them. The world lost trust in China. All of us have lost trust in China. Trust is something which is gone. Okay, no one trusts China anymore. It doesn't matter what China says. The normal thing is that the Chinese are lying. So, except the even Pakistanis, I don't think they. Uh, I'm sure they're also clear that the Chinese lie a lot. So that is gone. That is why this is there. It is a matter of false confidence which led them up this path. Yeah, boom is over, doom is waiting, gloom has started. Oh, thank you. Doom is waiting. What would be the EMP? What is it? Vishwanathan, just say. Repeat your question. Property sector is easy to employ even unskilled people as well. Auto cannot replace property. Yeah, I agree with you, Joy. That's the problem. That's the question they have. They don't have an alternate sector to replace the property sector. Tesla is building an EV factory in Germany. What would be its impact on the existing Tesla plant? Yeah, see, the generally what all companies are doing is they are building plants elsewhere. So their future expansion is not in China. They're not closing down because China is still a market. After all, China has got a huge market. People are still rich. There are rich people in China who can buy, and they'll buy. So that market, the the West has to exploit. Otherwise, the West will collapse. The Western economy and the US economy will collapse. So they're still building within China, but they're doing only for the Chinese market. Their export for other parts, they're going out. That's the issue. The Chinese economy is an aided one, and its survival is predicated on the continued benign support from Europe and US. Would their wolf warrior diplomacy reverse their present economic decline? No way. If someone now goes and talks wolf warrior to any of these people, they'll say get lost. It will go even worse. Could you explain the fintech dilemma? Okay, I'll explain it to you. I'll explain it to you. Have to go back. You see, when Alibaba wanted to go global, he wanted to take Ant global. He also wanted to set up something called a Alipay system. Alipay is still there, like Google Pay, but he wanted to set up in a bit of a sophisticated manner. And this Alipay system was to operate globally and seamlessly across currencies. And this is where the fintech system, why uh, he broke. When he wanted to do this, right, Jack Ma, others also caught on, right? They also wanted to do all that. But that meant that Jack Ma would have circumvented all financial regulations of China.
China's control on Jack Ma would have gone completely. And then somewhere they realized that Jack Ma had developed a program by which he was almost trying to introduce a alternate currency system, not yuan, not a regular currency. Everything would be on yuan on top, but internally he was generating something like what's it, Bitcoin or whatever you call it, which would undermine yuan completely once he went global, and others were interested in doing it. The moment Xi Jinping and company came to know about this, they broke the fintech sector completely. Okay, so your financial technology center today runs your banks. Your complete banks are on fintech. Your insurance is in fintech. Okay, a lot of your other dealings are on financial technology. Okay, your Google Pay, your payment, small payment bank is all fintech. He's broken it completely. Yeah, there is some a lot of fintech still in, but that's all state controlled. It is not like us completely free. Okay, so that is the thing which happened. And fintech is very good for small dealers or for the private sector. If the private sector has to grow, you need fintech. If our private sector has to grow, if our everything has to grow, you need fintech. But that's not happening in China. It's gone. And that was valued at over $1 trillion. When he broke fintech, $1 trillion business he just broke. And that is the start. He not only broke the fintech, he broke the edtech, educational technology. Because all these firms which were giving coaching for China's entrance exams were broken 2 years back. He wanted to make education fairly competitive. See, the idea of Xi Jinping was not bad. He said, why should the common man sweat throughout his life to pay exorbitant fees? Like in India also, आप देखिए कितने आकाश हुआ ये फिट जी है ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं और आपसे पैसा लेते हैं वही कहानी है चाइना में ओनली थिंग इट इज मच मोर चाइना में दिस एडटेक सेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 2 or 1. It was heavily loaded and people had to pay. And Xi Jinping said, no, why should this happen? So he scrapped it. By scrapping it, he started private tutoring systems. Now people pay private tutors instead of paying it through portals and all that. It is being done privately. That's about all. The financial transactions are still going on. People are still paying so much for their children's education, but it's not being done through an organized sector. It is now unorganized. But overall, the GDP has crashed because it's all gone into black market. So when you see all this, see what happened in the past 2-3 years to now, then you understand it's all up. Okay. So Alabama has been taken over by the state. Will others be motivated to innovate individually in China now? Alabama taken over by the state? Which Alabama? I think something's wrong in this. ओके दिल दरिया और दिमाग समुंदर ओके क्या बोलता है ये पहली बार आ रहे हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविलाइज्ड यूरोपियन को तो यूक्रेन पे सुनाते हैं कतर पर चुप बैठे हैं क्यों हम अपने आप लातों के भूत नहीं मान बना रहे देखिए आपका जो सोच है ना कतर के बारे में थोड़ा दोबारा सोचना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक वीडियो किया था कतर के बारे में आप कतर के बारे में पढ़िए उस वीडियो को देखिए उसमें आपका इस सवाल का जवाब है हम कतर के साथ चुप नहीं है और कुछ नहीं होगा कतर को ये भी बता रहा हूँ हमें कतर की जरूरत है हमें
कतर की जरूरत है जितना कतर को हमारा जरूरत है। आप उसने इतना हमारे अंदर इन्वेस्ट किया है, आप उसको ये नहीं बोल सकते लातों का भूत, क्योंकि 8 नेवी ऑफिसर्स का ये देखिए। और बहुत बहुत वीडियोस ने मैंने देख लिया, कतर को हम ये करेंगे, कतर को वो करेंगे, ये कर दो वो कर दो। वो बेवकूफी है। वो आपको पट्टी पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बेवकूफ बना रहे हैं ये वीडियो लोग यूट्यूब चैनल में, कि कतर बुरा देश है। कतर एक बहुत समझदार देश है, मैं अभी बता रहा हूँ। समझदार इसीलिए है, ये सबके जेब में इसका हाथ है, कतर का। कतर का हाथ यूएसए के जेब में है, टर्की के हाथ जेब में है, ईरान के जेब में है, सऊदी के जेब में है, हमास के जेब में है, और सबके जेब में है। सबके जेब में कतर का हाथ है। और कतर का पैसा सबको चाहिए। कतर के पास इतना पैसा है, उसको पता नहीं करना क्या है कल के दिन। कतर ने यूएसए का सेंट्रल कमांड को अपने जमीन पर बोला कि भाई आप यहाँ रहो। कतर ने ये सब क्यों करता है? कतर इसीलिए करता है ये सब कुछ, क्योंकि अगर वो ना करे, सब उसको तरफ ना देके, तो कोई खा जाएगा इसको। छोटा सा देश है ये, 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर भी नहीं है। खुद का आबादी 3 लाख भी नहीं है। बाकी सब बाहर का आबादी है। सब कुछ बाहर है, सिर्फ इनके पास क्या है? गैस है। गैस से पैसा बनता है, और उस पैसे के खेल खेल रहे हैं वो। ठीक है, आपके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है, बायजूस में इन्वेस्टमेंट है, और बहुत बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। और भी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वहां, यहाँ। ये जो 8 नेवी ऑफिसर जो वहां काम कर रहे थे, वो एक इन्वेस्टमेंट का, एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहाँ 8 लाख हमारे लोग हैं वहाँ काम करने वाले, काम करते हैं वहाँ। कहा क्या करोगे आप कतर को? एक बार अल जजीरा चलाता है कतर में। वो अल जजीरा से जितने वहां देश हैं वो डरते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी यहाँ अल जजीरा में आके बोला जाता है। अगर आप इससे एक साइड पुश करोगे कतर, दूसरे साइड चला जाएगा, और दूसरे वो आपके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा बिना जान के, बिना, ये जितने मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैं तो हैरान हूं जिस तरीके से कतर के बारे में लोग बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना विदाउट एनी स्टडी। They don't know Qatar. They don't know what's the usefulness of Qatar. Look, you have to give that state, small state, it has put itself in a position where it is a friend to all, okay, and an enemy to none, and it plays everyone off against each other. If it does not, कल के दिन कतर को कोई खा जाएगा। ऑलरेडी सऊदी अरेबिया एक बार कू कर चुका है, ट्राई कर चुका है। उसको अवॉर्ड ऑफ करने के लिए यूएसए का पूरा बेस है उधर। जब तक यूएसए का बेस है, कतर को कुछ नहीं होगा। थोड़ा सोच सोच समझ के सोचिए, राइट? इसीलिए मैंने आपको इतना टाइम लिया। जो आते हैं आप हमारा चैनल के ऊपर, हमारा चैनल के ऊपर सनसनी केस नहीं होगा। ये बेवकूफी की बात मैं करूंगा नहीं। मैं एवरी यू नो रिप्लाई आई गिव टू यू पीपल इज अ बैलेंस्ड रिप्लाई। सोच समझ के बोलूंगा मैं, इसका परिणाम क्या होता है। ऐसे बोलते रहो बकवास तो, राइट? तो थोड़ा सोच के पूछिए, राइट? अलीबाबा, ओके, अलीबाबा की बात कर रहे हो विश्वनाथन, ओके। अलीबाबा हैज बीन टेकन ओवर, या दे China has taken over almost all the firms, whether it's Meituan, Telephone, Tencent, Didi, all they have taken over today. Property sector anyway, they don't want to touch also. So there's not this thing. Okay, it is deficit to exploit the weakness of China because they have ruthless, strong central power. CCP can make decisions quickly at total surveillance threat.
Does India have strong central power? No, we don't have that kind of. We're a federal structure, and it's good we remain a federal structure like this, because the checks and balances of the federal structure will ensure that your GDP will go up sustained, your progress is sustained. It will not be like China. It will not be that one fellow thinks what is good for you on when he wakes up tomorrow, and he passes an order which you cannot get out of, which is detrimental to you. Okay, it is good that we are a federal structure. We need a strong center, but we need equally strong states, and only then will people of India be empowered. We've had problems. Go back to the time when Mrs. Indira Gandhi was the prime minister. She put emergency and all that. A lot of people had problems at that time. We don't want to get back to that kind of a thing. Okay. Sir, Chinese infrastructure is the best in the world. Indian में corruption और inefficiency. हीरा ठाकुर बस ड्राइवर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो. इनका काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हैं. काफी इन्होंने जो बेल्ट एंड रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसका सपोर्ट नहीं है, और इनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं. इनका खुद का प्रॉब्लम्स बाहर हमें पता नहीं चलता, तभी आप सोचते हो. करप्शन और इनएफिशिएंसी हमारे अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये मत समझना कि चाइना के अंदर कम है. इनका एफिशिएंसी है कारोबार करने में, सब कुछ करने में. बहुत जल्दबाजी में कर लिया और धीरे धीरे भुगत रहे हैं. ये भुगतेंगे, आप देखते जाइए. Okay, why did the policy makers in China did not see the catastrophe caused by one-child policy? How can they be blind to the obvious? Bharat Vichar. This is a good question you asked. This one-child policy, that there are problems in the one-child policy. ये कल परसों नहीं पता चला. इनको 2005 में, 2003 5 या 4 में पहले पेपर निकल के आए थे कि भाई ये आपको प्रॉब्लम होगा. 2006-7 में इन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी लागू किया, अगर आपको पता नहीं है. 6 या 7 या उस वक्त पर उसके ऊपर पॉलिसी लागू कर दिया, बट अमल नहीं किया क्योंकि अमल करना मुश्किल था. ये पैसा बनाने के चक्कर में थे, आगे बढ़ने के चक्कर में थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई जैसे आगे बढ़ेंगे ये करेंगे, ये तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, और इसको नजरअंदाज करते रहे. 2011 में जब जी जिनपिंग was to take over power, वर्ल्ड बैंक एंड देयर स्टेट काउंसिल, इनका चाइना का खुद का स्टेट काउंसिल, ओके, का एक जॉइंट स्टडी निकला. और इसके बारे में मैंने आपसे बात भी किया पहले एक एपिसोड में, और उस एपिसोड को दोबारा देखिए, मेरे को याद नहीं है, बट संक्षिप्त रूप में ये है कि दैट जॉइंट स्टडी आउटलाइंड problems which China is going to face. And one of the problems which they highlighted was population. They said very clearly in that study, it's a beautiful report. If China had followed that report, it would have been a superpower by now. Okay? They said your population is going to be a problem. Implement, offsetting policies. They didn't. Nazarandaz karte gaye, they just kept a blind eye to this whole story. वो क्या बोलते हैं, विपरीत काल विनाश बुद्धि. Yeah, that's the whole thing. Some Maoist insurgency in Eastern India, West Bengal, वगैरह 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 को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, माओइस्ट इंसर्जेंसी को डील करने के लिए एक ही रास्ता है, डेवलपमेंट. अच्छा डेवलपमेंट. अगर आप गलत डेवलपमेंट करोगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा. अगर आप जाके माओइस्ट इंसर्जेंसी कहाँ पनप रहा है ये देखो, वो इलाके में पनप रहा है जो पिछड़ा हुआ इलाका है, या कबायली इलाका है, ट्राइबल एरियाज में है, या जहां गरीबी है. बिकॉज okay, so if you go to a tribal area and you want to set up a factory and you do deforestation and you take the land away from the tribals and you don't give livelihood to tribals, फिर तो आपको प्रॉब्लम है ना. उनको नौकरी मत दो, उनका जो भी रहन सहन, जो भी उनका नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, उसको आप
हिला दो और फैक्ट्री लगा दो और वहां प्रदूषण ज्यादा पैदा कर दो तो आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। और वहां उस हालत में ये माओइस्ट वाले और माओवादी सोच विचार आगे पनपेगा। और वही हुआ हमारे यहाँ में। माओइज्म क्या है? ये नक्सलिज्म का एक स्ट्रीक है। और नक्सलिज्म हुआ कहाँ? नक्सलबारी में चारू मजूमदार ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? अगर आप कभी नक्सलबारी में गया, 79 80 में गया था नक्सलबारी, अगर आप 80 में अगर आप वहां नक्सलबारी में जाके देखते तो आपको पता चलता कि वहां बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका गरीबी है, वहां पनपता है। जहां भी ज्यादा गरीबी है वहां ये कम्युनिज्म, नक्सलिज्म और माओइज्म पनपता है। और जब लोग आक्रोश हो जाता है उनमें अंदर आक्रोशित, when they become angry, then they become violent or it becomes a movement. You have to go through this whole story. अगर आप पूरा देखोगे ऊपर से छोटा नागपुर, अ, विंध्या, गोंड इलाका, ये सब अगर आप देखोगे, ये पिछड़े हुए इलाके हैं, कबीली इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज दैट इज, एंड पुअर एरियाज, दैट इज वेयर इट स्टार्टेड। एक ही चीज है, प्रोग्रेस। और वो प्रोग्रेस ये नहीं कि फैक्ट्री लगाना, पढ़ाई, रोड्स, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, बिजली, पानी, वो चीज हम करते नहीं। हम जाके वहां एक बड़ा एल्यूमिनियम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें वो काम नहीं कर सकते, उनको कोई फायदा नहीं है, और जो उनके पास जमीन है वो हड़पा जाता है। तो यही कहानी नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो तरीका हमारा सोच अलग होना चाहिए, उसके साथ साथ एंटी माओइस्ट ऑपरेशन भी करना चाहिए। ये इसमें ये दो राय नहीं है। पर सिर्फ अ, एक चीज करना नहीं है, दोनों करने की जरूरत है। ओके। इज चाइना ट्रांसफरिंग फ्रॉम कैपिटलिज्म कम्युनिज्म टू डिक्टेटरशिप? यस, ये तो हो गया ऑलरेडी, ये तो डिक्टेटर। ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला कि चाइना डिक्टेटर है, चाइना, ये जी जिनपिंग डिक्टेटर, तो मैं कौन होता हूँ? ओके। तो ये है जो आज मैं बताना चाहता था आप सब लोगों को। कल हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो जनरल हसनैन के साथ बात करेंगे। आइए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी सिक्किम में क्या हुआ, अभी टनल में लोग फंसे हुए हैं, राइट। ओ, और भी है। ओके। व्हाट वाज आवर पीस कीपिंग फोर्स डूइंग इन श्रीलंका? श्रीलंका के बारे में किसी और दिन। ओके। I agree. Different states trying different models of upliftment. Yeah, I agree with you. Yeah, thank you. So tomorrow I'm going to talk about disaster management and why it's important and what do we have to do. And it'll be a series on disaster management, and a lot of people will come. General Hassan has said on Gunner Shot exclusively we'll do something on disaster management. It affects all of us. हम सब कुछ होता है किसी न किसी दिन। हमारे अगर हमारे ही घर में डिजास्टर हो गया तो हमें मदद की जरूरत है, हमें पता होना चाहिए। या दूसरे के घर में मदद डिजास्टर हो गया, हमें पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद 2 3 दिन मेरा नहीं होगा, क्योंकि 16 17 18 आई एम गोइंग टू बैंगलोर। वहाँ सिनर्जिया कॉन्क्लेव है, वो जो एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव है, वहां जाके मेरे को बात करना है। उसके बाद वापस आने के बाद वर्ल्ड कप फाइनल्स में, तो वर्ल्ड कप तो देखना ही है, राइट। अब सब देखिए अच्छी तरीके से। हो सक मेरा यही प्रार्थना है कि इंडिया जीत जाए। और कल परसों इंडिया जो है ना, कल सेमीफाइनल्स जीत गया तो उस दिन भी जीत जाएगा, तो हमें देखने की जरूरत है, इसीलिए कल भी मैंने नहीं रखा। 20 तारीख को एक चाइना के बारे में कहीं जाके मेरे को बात करना है, तो हो सकता है 20 तारीख शाम से दोबारा मैं वापस शुरू करूंगा। अगर बीच में मेरे पास टाइम मिला तो एक आध वीडियो करूंगा, या ऑन इम्प्रॉम्प्टू एक आध छोटे चीज के ऊपर करूंगा। तो एक थोड़ा ब्रेक होगा। और ये टाइम आप भी सोचिए
क्या क्या और आपको सब्जेक्ट्स चाहिए, प्लीज कम्युनिकेट टू मी थ्रू द कम्युनिटी टैग इन द गनर शॉट. Yeah, last point I'll take. India is still buying a lot of components for railway sector. It is just in the, yeah, I agree with you. I agree with you, Kaushik, completely. I कल परसों जब रिजेक्टिंग चाइना के ऊपर बात किया था, that trade with China, the imports from China have gone up. I've said that already, and we are buying what we need. It's not only in this thing, we're doing in basic raw materials or semi-finished products. We are importing a lot of stuff from China, including API for pharma. That is the maximum. Of course, consumer items also we are importing, which we have scope to reduce. Okay, thank you. Good evening, and I'm thankful to all those of you who have today attended. And thanks. Jai Hind.